अच्छा यार, so तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान has asked me to respond to a few questions. पहली बात तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उनका कि that you consider my opinion to be worth listening to. So thank you very much for giving me this opportunity to say a few words. उन्होंने कुछ सवाल मेरे से किए हैं which I will repeat and then I'll try to answer to the best of my ability. सबसे पहले वो पूछते हैं what is feminist ideology? देखें, फेमिनिज्म इज बेस्ड ऑन वन फंडामेंटल आइडिया कि मर्द और औरत बराबर हैं, कि तमाम इंसान इस दुनिया में बराबर हैं एंड द फैक्ट दैट अ पर्सन इज अ मैन और अ वुमन इज नो बेसिस टू गिव वन पावर ओवर द अदर. नाउ बहुत से लोग समझते हैं कि इस आइडियोलॉजी को एक्सटेंड किया जा सकता है दैट दिस इज एक्चुअली अ मैटर ऑफ वुमेन वांटिंग टू अप्रेस एंड सप्रेस एंड कंट्रोल मेन. यानी कि इस वक्त जो हमारा पितरशाही सिस्टम है वेयर मेन आर इन अ पोजीशन ऑफ पावर एंड सुपीरियरिटी, कि उसको रिवर्स करने की कोशिश है. दैट इज एक्चुअली एब्सोल्युटली अनट्रू. द फंडामेंटल आइडिया ऑफ फेमिनिज्म इज दैट देयर शुड बी इक्वालिटी बिटवीन ऑल ह्यूमन बीइंग्स एंड दैट इंक्लूड्स द डीलिंग and working against the inequality that is based on gender. In fact, ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है समझने वाली, because there are many people who work for the equality of human beings. There are people who work on it in terms of ethnic equality, in terms of religious equality, in terms of class and economic equality. लेकिन feminism is unique in that it identifies a specific problem and a kind of inequality that is related to gender. तो फेमिनिज्म का मकसद अव्वल ये है टू एस्टैब्लिश व्हाट मेनी अदर मूवमेंट्स आर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश व्हिच इज द इक्वालिटी बिटवीन ह्यूमंस. लेकिन चूंकि उनका फोकस है द इनइक्वालिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन, दैट इज व्हाई दिस इज ए यूनिक फॉर्म ऑफ एडवोकेसी. दिस इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम अदर्स क्योंकि अज्यूम करता है, ये आइडेंटिफाई करता है दैट देयर इज एन इनइक्वालिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन. सवाल आगे करते हैं कि एंड व्हाट रोल डज फेमिनिज्म प्ले इन क्रिएटिंग अ सोसाइटी दैट इज बेस्ड ऑन इक्वालिटी. बेसिकली यही बात, जब हम तस्लीम कर लेते हैं कि मर्द और औरत में फ़र्क है, यानी कि इन टर्म्स ऑफ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इन टर्म्स ऑफ वेल्थ इक्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ लीगल इक्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ सोशल इक्वालिटी, तो फिर आइडेंटिफाइंग दिस स्पेसिफिक इशू अलाउज यू टू वर्क अगेंस्ट इट. तो इसके अगेंस्ट एक कार्रवाई की जा सकती है, इसके अगेंस्ट वर्क किया जा सकता है. सो दैट इज द रोल ऑफ फेमिनिज्म, इज टू आइडेंटिफाई दीज स्पेसिफिक इंस्टेंसेस ऑफ इनइक्वालिटी बिटवीन मेन एंड women and based on that identification फिर उसका कोई हल निकाला जा सकता है, कोई इस्लाह की जा सकती है मुआशरे में. फिर आगे वो सवाल करते हैं what is it like to be a male feminist in a society. बहुत ज़रूरी बात अभी मैं आपको बता दूं that there is no such thing as a male feminist or a female feminist. You are a feminist or you are not a feminist. हाँ, ये ज़रूर एक बात है. लोग अक्सर हैरान होते हैं कि यार देखो, ये जो पेट्रियार्कल सिस्टम है इसने तुम्हें कितने फ़ायदे दिए हैं. एंड इट इज़ करेक्ट. एज अ मैन ग्रोइंग अप इन पाकिस्तान, मैंने तो बहुत फ़ायदा मुझे रहा है बिकॉज आई एम अ मैन. जो पोजिशन ऑफ पावर आई ऑटोमेटिकली इनहेरिट ऑन अकाउंट ऑफ माई जेंडर, उसके खिलाफ बात करना, ये तो कुछ लोगों के लिए एक बड़ी हैरानदेह बात होती है. लोग समझते हैं कि यार ये तो अजीब बात है. इट्स वेरी अनयूजुअल to see people speaking against the very system that is empowering them, that gives them power. लेकिन शुक्र है हमारे माशरे में बहुत से ऐसे लोग हैं who for instance speak against political inequality, wealth inequality. वो लोग भी अक्सर बहुत ही अमीर घरानों से हैं. There are a lot of activists within our society that come from educated, well endowed families. यानी कि बहुत उनके पास दौलत है, उनके पास प्रॉपर्टीज हैं, उनके पास रिचेज हैं, लेकिन फिर भी वो बात करते हैं about this massive income inequality that we have in our society, the wealth inequality in our society. So I don't think that there is anything weird about being a man and being a feminist. But let me make it clear again, there is no such thing as a male feminist. There is a feminist or there is somebody who's not a feminist. अच्छा, अगला सवाल ये है, why is there a higher percentage of misogynists in this society and what do you think the core reason for that is?
देखें, ये तो एक बहुत बड़ी बात है. वाई इज देयर अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ मिसोजिनी इन आवर सोसाइटी? पहली बात तो ये अज्यूम करना कि हमारे माशरे में दूसरे माशरों से ज़्यादा मिसोजिनी है, आई थिंक दैट इज़ फॉल्स. क्योंकि जो मसले मसाइल हमारी माएँ, बहनें, बीवियाँ और बेटियाँ फेस करती हैं हमारे माशरे में, ये सिर्फ हमारे माशरे तक महदूद नहीं, सिर्फ हमारे माशरे में नहीं पाई जाती. हमारे इर्द गिर्द जो हमसाए हैं, अफगानिस्तान, इंडिया, यू गो अप इनटू चाइना, यू गो इनटू वर्चुअली एवरी अदर सोसाइटी इन द वर्ल्ड, टू सम एक्सटेंट और द अदर, औरतों को ये इनइक्वालिटी फेस करनी होती है. सो मिसोजिनी इज ए ग्लोबल फिनोमिनन, सिर्फ हमारे माशरे में नहीं पाई जाती. नाउ व्हाई इज दिस परसेंटेज सो हाई? ये तो एक पूरी हिस्ट्री है हमारी. देयर हैज बीन ए थियरी that at the time that human beings were hunter gatherers, जहाँ पे मर्द शिकार करते हैं, औरतें वो जो domiciles थे उनका ख्याल करती थी. At that point there was a greater interdependence of men and women. However, at the point that man became an agriculturalist, जब ज़मीनें, जायदादों की बातें शुरू हो गई थी, then there was a push towards ensuring कि जो आपकी जायदाद है, which a hunter does not have. A hunter has his hands and his weapons and the food that he has hunted that day and eats it and then it's gone. But somebody who is an agriculturalist, उसके पास जायदाद होती है, उसके पास ज़मीन होती है, उसके पास टूल्स होते हैं, तो ये टूल्स उसकी प्रोजेनी को जाएं, यानी कि उसके बच्चों तक जाए. एट दैट पॉइंट देयर वाज सडनली एन इंसेंटिव टू कंट्रोल द रिप्रोडक्शन ऑफ वुमेन. औरतों की रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करने के लिए औरतों को कंट्रोल करना ज़रूरी था. तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट मोर एंड मोर सिस्टम्स वर बिल्ट अप in order to limit the mobility of women, in order to limit the control and power of women, in order to limit the autonomy of women. तो ये तो एक प्रोसेस में से पूरी इंसानियत गुजरी है. Again, like I said, this is not just in our part of the world, this is across the planet. Women, on account of the fact that the most valuable thing for in a particular point in society, their greatest role was as the incubators of the next generation, as the people who were giving birth to the next generation, and knowing whose child was who was imperative in order to pass on your wealth to your own progeny. तो उस कॉन्टेक्स्ट में उनको कंट्रोल करने के लिए कुछ सोशल स्ट्रक्चर्स बिल्ड हुए थे और बिल्ड किए गए और मेंटेन किए गए थे, और वो फिर रिलीजन के जरिए, कल्चर के जरिए, नॉर्म्स के जरिए वो तमाम सिस्टम्स मेंटेन किए गए हैं. एंड दैट इज व्हाट वी डीलिंग विद नाउ इन दिस जनरेशन, कि यही स्ट्रक्चर्स जो कि ओवर द कोर्स नॉट ऑफ 5-10 years but over the course of 5-10 millennia that have essentially imprisoned women, controlled women, अब उनको तोड़ा जा रहा है, उनको क्वेश्चन किया जा रहा है, उनके बारे में यही सवाल उठाए जा रहे हैं कि भाई क्या ज़रूरत है, who are you to control what I wear, where I go, who I marry, whether I can move or whether I cannot move. So that is what we're dealing with at this point. अगला सवाल, दिस इज समथिंग, एक इल्ज़ाम जो अक्सर मेरे पे भी लगाया जाता है. द क्वेश्चन इज, फेमिनिज्म इज ऑलवेज लिंक्ड टू सम वेस्टर्न एजेंडा, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन इट? यार देखो, देयर इज नथिंग वेस्टर्न for a person wanting to be in charge of their own destiny. तो ये तो एक बहुत आसान तरीके से हम अपने माशरे में डीलेजिटिमाइज करना चाहते हैं उन औरतों को जो कि कहती हैं कि भाई मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूं, आई एम नॉट योर प्रॉपर्टी, आई एम नॉट समवन दैट यू कैन टेल और यू कैन कंट्रोल. सो इन ऑर्डर टू डीलेजिटिमाइज अ फंडामेंटल ह्यूमन थिंग, यानी ये तो हर इंसान चाहता है कि वो अपनी जिंदगी को कंट्रोल करे, अपने जिस्म को कंट्रोल करे, अपनी एक्शंस को कंट्रोल करे. तो इन चीजों को डीलेजिटिमाइज करने के लिए हम कहते हैं नहीं, ये तो एक साजिश है, ये तो वेस्टर्न एजेंडा है, उनका एजेंडा है, उनका एजेंडा है, उनका एजेंडा है. और ये नहीं मानने को तैयार कि भाई हमारी माएँ, हमारी बहनें, बीवियां और बेटियां जो कि हमारे माशरे में ही पली हैं, जो कि हमारी वैल्यूज के साथ ही पली हैं, वो भी सोच सकती हैं, वो भी ये फील कर सकती है कि यार मैं नौकरानी नहीं हूं, that I am not your property, I am not someone that you can boss around, I am not someone for you to control. So in my opinion, ये वेस्टर्न एजेंडा वाला जो इल्ज़ाम है ये फजूल है. It is a totally rhetorical, nonsensical accusation which means absolutely nothing. ये हमारी माँओं, बहनों और बीवियों को डीलेजिटिमाइज करने के लिए एक नारा है, लेकिन उससे आगे कुछ नहीं है.
Now, the next question, and this is much more practical. How can males use their male privilege to empower women in society? मेरे से अक्सर लोग कहते हैं कि यार you are someone who is pushing ahead in the fight for women's empowerment. We need leaders like you. We need people who can lead the way that way. I think a very, very important thing that us men have to do if we genuinely believe in empowering women, in ensuring कि उनको उनके हकूक मिले कि उनको हमारे साथ हमारे बराबर वो आ जाएं, is to step back. मैं हमेशा लोगों को यही कहता हूं कि यार आई एम नो लीडर, आई एम एन एलाई. फेमिनिस्ट स्ट्रगल जो वुमेन्स राइट स्ट्रगल है, उसमें आगे द लीडर्स, द वैनगार्ड, दे आर वुमेन जिन्होंने ये जिंदगी एक्सपीरियंस की है, जिन्होंने ये इनइक्वालिटी एक्सपीरियंस की है. मी एज अ मैन विद माई मेल प्रिविलेज, द फर्स्ट थिंग आई हैव टू डू इज टू चेक इट. I have to check my male privilege. I have to accept a back seat. I have to acknowledge the fact कि भाई मैं इस वक्त पैसेंजर सीट में बैठ सकता हूं और पैसेंजर सीट में मैं जितनी मदद कर सकता हूं ड्राइवर की वो मेरा काम है. But that is it. The other thing that I can do, the only place where I can assume some level of leadership is not in terms of telling women how they're supposed to fight their feminist struggle. It's not कि मैं औरतों को बताऊं कि आप ऐसे बात करो, उस तरह बात करो, आप इस तरह के placards ना बनाओ, उस तरह के ना बनाओ, आप बात इस तरह करो, उस तरह ना करो. No. My attention has to be directed towards my brothers. यानी कि हमारे माशरे के जो मर्द हैं उनके लिहाज से I have to speak and explain and talk to them कि भाई easy हो जाओ, take a step back, check your male privilege, and most importantly आप तस्लीम करो, एक्सेप्ट करो कि इस वक्त हम एक प्रिविलेज पोजीशन में हैं, हम एक अनफेयर पावर एसिमेट्री का फायदा उठा रहे हैं. इसको आप छोड़ो, स्टेप बैक एंड एक्नॉलेज द इक्वालिटी ऑफ योर मदर, योर वाइफ, योर सिस्टर एंड योर डॉटर. Now, the last question is specific to the time that we're in right now, which is in coronavirus times, domestic violence is on the rise. What do you say regarding this? ये एक बहुत unfortunate चीज़ है. ये सिर्फ हमारे माशरे में नहीं देखी जाती. ये among other things, in France there was a big research that was conducted that saw that there was a 30% rise इन डोमेस्टिक वायलेंस. और उसकी वजह यह है कि बहुत सी फैमिलीज हैं जहां पे एक बड़ा टिपिकल डिवीजन ऑफ लेबर है कि जी मर्द बाहर जाता है, वो नौकरी कर रहा होता है, सो ही इज आउट ऑफ द हाउस मोस्ट ऑफ द डे, और बेगम घर पे होती हैं और घर संभाल रही होती हैं, तो उनका आपस में टाकरा नहीं होता. दीज डेज दे आर एक्चुअली पुश्ड इनटू क्लोज क्वार्टर्स ऑल द टाइम. तो झगड़े तो होते हैं, मेरी और बेगम के साथ भी हमारी भी थोड़ी सी इरिटेशन एक दूसरे से हो जाती है. बट द फैक्ट दैट देयर इज एन इंक्रीज इन डोमेस्टिक वायलेंस, ये तो हमारे एक ब्रॉडर एक बीमारी जो माशरे में है, जो हम मर्दों की इंटाइटलमेंट है, जो हम समझते हैं कि भाई यार वी आर इन चार्ज, कि भाई वी आर द वंस हु आर सपोज्ड टू डिसाइड, आवर वाइव्स आर सपोज्ड टू बी ओबीडिएंट, दे आर सपोज्ड टू डू एग्जैक्टली एज वी से. तो भाई जब वो आप क्लोज क्वार्टर्स में आप फंस जाते हो, तो फिर आप बीवियां भी वो भी कहते हैं कि यार लुक लिसन, इज वन थिंग व्हेन यू कम बैक आफ्टर अ लॉन्ग डे एंड यू सिट एंड यू ट्राई टू पुश मी अराउंड अ लिटिल बिट, शायद मैं वो बर्दाश्त करूं, लेकिन 24/7 मुझे 2 सेकंड का सांस लेने का मौका नहीं मिलता. तो फिर वहां पे उनका टकरा हो जाता है, उनकी लड़ाई हो जाती है. एंड अनफॉर्चुनेटली, वेरी वेरी सैडली, हम मर्दों को भी सिखाया जाता है कि हम अपने एज अ पार्ट ऑफ दिस पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर व्हिच डिफाइंस अ सर्टेन काइंड ऑफ मैस्कुलिनिटी, जिसमें इट इज समहाउ द अदर एक्सेप्टेबल कि हम मर्द अपने मसलों को हल करने के लिए अपना हाथ उठाते हैं, कि हम हाथापाई में लग जाते हैं, कि हम कुश्ती करते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़े करते हैं, दैट वी रिजोर्ट टू वायलेंस इन ऑर्डर टू सॉल्व आवर इश्यूज. आई थिंक दैट इज पार्ट ऑफ दिस टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी दैट इज प्रमोटेड इन पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर्स. और वो अनफॉर्चुनेटली ये घरों में औरतों को, बीवियों को, बेटियों को इसकी प्राइस पे करनी पड़ती है, ये कीमत उनको पूरी करनी पड़ती है, बिकॉज men are not taught to deal with conflict in a non-violent way. They are not shown, they are not told कि भाई a real man does not raise his hand. A real man understands how to speak, use his mind, use his words, understand how to resolve and deal with conflict and not come in ऊपर से ओए नहीं you are supposed to do this था वरना मैं लगा दूंगा. So ये डोमेस्टिक वायलेंस का जो स्पाइक हम फील कर रहे हैं, दिस इज बिकॉज मर्दों और औरतों का फैमिलीज में इंटरनली उनका आपस में अब टाकरा ज्यादा हो रहा है, उनके झगड़े ज्यादा हो रहे हैं. एंड अनफॉर्चुनेटली हम मर्द नहीं जानते कि हम
इन कॉन्फ्लिक्ट्स को किस तरह हैंडल करें without actually using our fists and our hands. So I think in order to resolve this issue, we need to address something much bigger, and that is, what does it mean to be a man? How does a man address his issues? How does he deal with his frustrations? And secondly, एक तो है the method जिसके जरिए हम अपने मसले हल करते हैं, and the other thing is this assumption कि भाई मेरा हक है अपनी बीवी को लाइन पे लाने का, मेरा हक है कि मैं उसको सीधा करूं, मेरा हक है टू डिमांड कंप्लीट ओबीडियंस, और उससे मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूं अगर वो नहीं करती तो यार वो फिर मुझे मजबूर करती है कि मैं उसको मारूं. दिस इज ए सिक and absolutely wrong way of thinking about your role in a family, and definitely the single most disrespectful, unacceptable thing that you can do to the mother of your children, to the partner that you're supposed to live out your life with. So fundamentally, I think that what we are seeing here right now is a sign of a much bigger issue. And in order to address the domestic violence during this corona times issue, we have to deal with issues of ये जो सवाल है कि what is masculinity, and about the power asymmetry जो कि couples में भी, internally couples में भी होते हैं, कि मर्द भी हमेशा ज़रा ऊपर से आ रहा होता है, typically has more wealth, typically has more physical strength, typically has more control than a woman does, and therefore women end up being the victims, and they really should not be. So, again, I would like to thank Pakistan, Tahaffuz Pakistan, for giving me this opportunity. Just remember, guys, मैं इधर तो बैठा हूँ, but my heart always in Pakistan. Pakistan Zindabad.